So Arush, we have x-axis, y-axis. So let's take the function f of x equal to. I'm taking an example of 2 raised to x. Now what you have to understand is the base can be anything actually. I'm taking it as 2 raised to x. Yeah. So इसमें So लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है? लॉग तो कर लिया आपने बट उसका फंक्शन वही है log x is the function, that's it. जो डोमेन रेंज हमने डिस्कस किया, that's it, और कुछ नहीं. चलो in दैट्स इट. exponential function, ठीक है. that's it. In exponential function, Arush, see if we take हम्म. x as 0, if x is 0 the answer is 1, anything raised to 0 is 1. हम्म. If यस x सर. is, let's say, negative, अगर x negative है, do you realize if we take x as -1 for example, तो आंसर होगा 2 raised to -1 which is half, and half is हाँ. 0.5. तो 0.5 तो इससे भी नीचे, मतलब यहाँ पे आएगा. So do you realize the graph will start from here, but it will not meet the x axis, क्योंकि y का आंसर 0 नहीं हो सकता कभी. So it सर will never लेफ्ट meet the साइड से x क्यों चला? axis. लेफ्ट साइड लेफ्ट से साइड से. इसलिए क्योंकि x का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो y के आंसर्स बहुत ही छोटे होंगे. हाँ. फ्रैक्शंस में आएगा 1 हाँ upon 2, हाँ. 1 upon 8, 1 upon यस 16, यस. 0 point something. या. When x is 1, it will be 2 because 2 raised to 1 is 2. When x is 2, हम्म. it's 4. X is 3, it's 8. X is 4 पे सीधा 16 हो रहा है. So do you realize what we discussed just now? A steep increase in the graph. यस सर. That is exponential function. The base can vary from question to question, हम्म. but this is how the graph would look like. तो चलो इसका domain and range. So see, x can be any real number, एनी रियल नंबर. या. but जो answers होंगे, the answer will never पॉजिटिव. be 0. हाँ, and it will be positive, so it will be 0 to infinity. यस सर. Sure, write this and then we begin with the sums. या. हाँ सर. So first of all, Arush, we have to check whether a function from R to R or not, whether the following are a function from R to R or not. So let's हम्म. take the help of arrow diagram and understand this. यस. See, R to R means first set is also real number, second is also real numbers. रियल नंबर्स. या. So So this is real beginner's numbers box. means like negative, positive, zero, decimals, everything. So I'm just taking a few numbers so that we understand कि क्या होने वाला है यहाँ पे. हाँ. And here also we have same like negative, positive, zero, and obviously we have infinite real numbers. I'm just taking few examples. So we have root हाँ. x. Root x मतलब अब ये -2 है. चलो, what is root of -2? So do you know कि So root के अंदर negative नहीं चलता? iota. हाँ सर हाँ, नहीं होता. which means कि -2 से कोई arrow जाएगा ही नहीं. जो हाँ. negative numbers है, they will not be mapped. So do you realize हाँ. this is not a function? Even this is not a function. हम्म. Root वाले तो सर आर. root will not be a function. हाँ. तो R to R आ गया एंड इफ इट इज रूट के अंदर तो वो तो फंक्शन होएगा ही ना. नहीं होगा ना हर जगह. Correct, क्योंकि root के अंदर negative will be not defined. हम्म. Same with this, f square equal to x मतलब f is actually root x. तो वही बात हो गई ना, ऑप्शन ए और डी तो सेम है. So then B should also not be defined. Cube root नहीं, क्यूब रूट ऑफ -2 नेगेटिव का cube. होता है ना यार. क्यूब रूट ऑफ -27 is -3. क्यूब रूट will always give an answer. क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव is negative. अच्छा हाँ. बट सारे सारे चीजों के लिए ट्रू थोड़ी ना. होगा ना. अरे भले डेसिमल में आएगा, क्यूब रूट -2 कैलकुलेटर डेसिमल में में देख, आएगा. डेसिमल में आएगा हाँ. तो क्या फर्क पड़ता है. डेसिमल में रियल नंबर्स आएगा. में हाँ. डेसिमल चलता है. हाँ ठीक है सर. ठीक है. अच्छा, अब डोमेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट. डोमेन एंड रेंज जो है ना, हाँ. मेन है एकदम ये. Now before we हाँ. start with domain and range, I hope you understand domain means values of x, range means या.
वैल्यूज ऑफ वैल्यूज y। ऑफ y। अब डोमेन जो है उसके लिए दो रूल याद रखना है बस, जस्ट रिमेंबर टू रूल्स। द फर्स्ट रूल इज, अगर स्क्वायर रूट है तो अंदर नेगेटिव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल डोमेन के लिए। डोमेन के लिए, बराबर है ना, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट इज नॉट या एक्सेप्टेबल। सेकंड इज, इफ वी हैव अ फ्रैक्शन वन अपॉन समथिंग, तो डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस, जस्ट नॉट रिमेंबर दीज डिफाइंड। टू रूल्स। या हाँ, चलो बट स्टार्ट सर करते हैं। रेंज के लिए भी तो ये सेम ही होगा। रेंज मतलब y का वैल्यू ना, वो उसका पूरा अलग स्टोरी y। है। अच्छा। डोमेन अलग है, रेंज अलग है। चलो हाँ। क्वेश्चन 3 का ए, 1 माइनस लॉग एक्स। सी फॉर दिस यू हैव टू थिंक अबाउट लॉग एक्स, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमने डिस्कस किया। व्हाट इज द डोमेन हाँ। ऑफ लॉग फंक्शन? तो लॉग के अंदर जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल, नेगेटिव इज हाँ। नॉट एक्सेप्टेबल, सो डोमेन इज जीरो टू इन्फिनिटी। सो दिस इज डन, हाँ। जीरो टू इन्फिनिटी, दैट्स इट। अच्छा, तो बस वैसे दैट्स द लिख सकते हैं। आंसर, जीरो टू इन्फिनिटी। या बट सर 1 - log वन का ठीक x है, to the वन का कुछ base नहीं है। 10। सी लॉग के अंदर यू हैव टू टेल मी दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर डिफाइंड, और जो नॉट डिफाइंड है उसको निकाल देंगे हम। तो तो जीरो 0 निकाल to दिया, infinity। नेगेटिव निकाल हाँ। दिया, सो इट्स जीरो टू इन्फिनिटी। बी, हाँ सर, ठीक है। रूट ऑफ 5 माइनस टू एक्स। सी एज वी डिस्कस्ड, रूट के अंदर नेगेटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस। डू यू रियलाइज 5 माइनस टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? या। ये समझा? ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ। जीरो क्यों? बिकॉज पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर हाँ। देन इक्वल टू जीरो। यस सर। एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। तो minus 2x will be greater than equal to minus 5, and now we will divide by minus 2. Do you remember that rule which you had studied in 10th and 11th, that when we divide by a negative number, inequality reverses? यस। So what is the answer? Answer is x is less than equal to Is an equal to 5, 2.5. 2.5। So Yeah. answer is all real numbers, like from negative infinity to 2.5, where 2.5 is included. √0 हो जाएगा फिर सर। हाँ तो हाँ होने देना, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, होएगा, चलेगा। हाँ ठीक है सर, शैल समझ वी गया। प्रोसीड? या। सी इज एक्चुअली वेरी मच सिमिलर, क्योंकि वापस स्क्वायर रूट है। सो यू टेल मी हाउ शुड वी स्टार्ट विद सी? एक सेकंड सर, आई राइट दिस। सी। सो टेल मी हाउ विल यू स्टार्ट हाँ विद सी? सर, x² will be x² should be greater than equal to 4x, so x should नहीं be नहीं greater than नहीं 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 नहीं, एक मिनट। सो यू आर टेलिंग मी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यू आर टेलिंग मी दैट? greater than 0, sorry, greater than ग्रेटर 0 देन जीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, राइट? denominator। ये Yeah. फ्रैक्शन है। So Yes x sir। square minus 4x is greater than 0. Now, do you know how to solve such questions? See, this is quadratic plus Yes। inequality. तो इसको हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं। डू यू नो दिस वेवी कर्व मेथड? बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो इसका प्रोसीजर ये है, यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट क्रिएट करने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। व्हाट इज कॉमन ओवर हियर? x। तो x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस फोर। नाउ हाँ। वी हैव टू मेक अ रफ नंबर लाइन. See, we will equate both the brackets with 0. What will be the values of x when we equate both the brackets with 0? x will be 0 और x will be 4। तो नंबर लाइन पे मैं एक रफ प्लॉट कर रहा हूँ, 0 लेफ्ट में 4 राइट में, तो 0 हाँ। और 4 आ गया. डू यू रियलाइज दिस नंबर लाइन is divided into हाँ। three parts by 0 and 4. Yes। हम्म। In each part you have to select any random number of your choice, any random number. तो 0 के हाँ। लेफ्ट में कोई भी एक नंबर, योर चॉइस. 0 के लेफ्ट में टेक एनी नंबर. हाँ। So take any number, tell me. -1 सर। Minus 1 इसमें सब्सटीट्यूट कर and tell me is the answer positive or negative? सर नेगेटिव। नहीं, गलत, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव पॉजिटिव। आएगा. तो मैं ऊपर से बनाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव है.
हाँ चलो between 0 and 4 take any number of your choice. 1. चलो So substitute 1 and negative. tell me. नेगेटिव आ रहा Negative. है तो नीचे से जाएगा. Hmm. नेक्स्ट 4 above 4 take any number. 5. तो positive आ रहा है. तो पॉजिटिव आ रहा है. Positive. हाँ. अच्छा इन दिस सम व्हाट डू वी वांट पॉजिटिव और नेगेटिव. So positive. So 0 से 4 के बीच की वैल्यूज एक्सक्लूड कर ले. करेक्ट. सो व्हाट इज द आंसर. x belongs to तो negative infinity to 0 because we are selecting positive region. Union, it union is going to be 4 to 4 to infinity. 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 That's the answer. Yes, sir. Done. Shall we take the next one? एक सेकंड सर. सर एलन में हम लोग वेवी कर्व मेथड में वेव नहीं बनाते थे ना सर. क्या. बस प्लस. वेवी कर्व मेथड में हम लोग बस प्लस. चलो नेक्स्ट इज y is equal to 1 upon root mod of x minus x. So mod of x minus x will be greater than 0. So यस सर. mod of x has to be greater than x. या. You have to tell me all those values of x, Arush, for which mod of x will be greater than x. So -1, -2, -3. Correct. So do you realize if x is negative, only then mod x will be greater than x. Otherwise, यस. mod x will be equal to x. या. तो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा डोमेन इज ऑल नेगेटिव real numbers. नेगेटिव So रियल negative नंबर्स. infinity to 0 where बिल्कुल 0 टू is also 0. not included. नॉट इंक्लूडेड. या. That's the answer. Then shall we proceed? या. Okay, अब fourth वाला देख. We have log to the base 2. This is log to the base 3. Log of x to the base 4. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. तो अब थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको. फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन दिस. चलो log x to the हाँ. base 4. So you have to tell me x के क्या होने चाहिए वैल्यूज. What should be the values of x? वैल्यूज ऑफ एक्स. हाँ log है ना. सो. तो log का रूल क्या हाँ. है कि x के अंदर सो जीरो नहीं चलेगा हाँ. एंड बाकी पूरा चलेगा. 0 to infinity पूरा चलेगा. सर तो 1 नेगेटिव एंड इज अबव 1. नहीं 0 point something is लॉग. also acceptable ना. या मतलब ग्रेटर देन 0. इट शुड बी हाँ ग्रेटर greater देन than 0. 0. But now the problem हाँ. is, do you remember when we took the example of log function, we took the example of 10 और हमने क्या डिस्कस हाँ. किया था कि नंबर लाइन पे 10 जो है तो log 10 1 होता है हाँ. और फिर वो वैल्यू इंक्रीज होगा और पॉजिटिव में जाएगा. उसके पहले नेगेटिव होगा वैल्यू. हाँ. अच्छा यहाँ पे log का बेस क्या है. यहाँ पे बेस है 4. 4. डू यू रियलाइज कि log 4 1 होगा और फिर पॉजिटिव में जाएगा और उसके पहले नेगेटिव होगा. हाँ. Do you realize the problem is if x is anything less than 4, then the Then answer negative. of this is going to be negative, Yeah. which is not And that acceptable. is not possible. Yeah. क्योंकि उसके पहले भी तो एक log है ना. So do you हाँ. realize we should actually start from 4. Sir, but decimal values आएंगे तो decimal values का. See what is log 4 to the base 4? So 1. 1 है बराबर. और उसके बाद इंक्रीज होते जाएगा like 1 point something and it will just keep on हाँ. increasing. हाँ. So that's not a problem. Yeah. बट अब प्रॉब्लम देख क्या है. चल हमने 4 ले लिया बराबर है. सो हाँ. अज्यूम करते हैं कि x का वैल्यू लेट्स से 64 आ गया फॉर एग्जांपल. ठीक है आई एम टेकिंग हाँ. 64. चलो व्हाट इज log ऑफ 64 टू द बेस 4? 3. सो डू यू रियलाइज दिस विल बिकम 3. लाइक दिस विल हाँ. बिकम 3. हाँ. व्हाट इज log ऑफ 3 टू द बेस 3? 1. बट अगर हमने कोई भी दूसरा वैल्यू लिया, मतलब हमने सपोज लिया 63 62, तो उसका वैल्यू विल बी लेस देन 3 लाइक 2 point something. हाँ. हाँ. बराबर है. हाँ.
And do you recognize the problem in that case? The problem in that case will be कि ये 0 point something हो जाएगा. हाँ. अच्छा, log of 0 point something, is that defined or not defined? Log of 0.5, log of 0.6. So not It's defined. defined. It's defined. Defined. Log 0 अच्छा is हाँ, not defined. defined होगा. 0 point Log something zero is is not defined. defined. Defined, yes. So do you realize Hmm. the problem will arise? So this is actually not a problem. अभी तक problem नहीं है. The problem will arise when we will get 1 over here. क्योंकि अगर ये Yes. 1 हुआ आरुष, what is log of 1? Says zero. Zero. और अगर ये 0 हो गया, log of 0 तो problem है ना. हाँ. So do you realize in this sum x cannot be 4? हाँ. बाकी कुछ भी होने दे, problem नहीं है. ठीक But है. x Yes. cannot be 4. 4. ये clear है? हाँ. ठीक है. तो इधर so we just need to check the पहला वाला ना, आगे जाने का और जरूरत ही नहीं है. हाँ. चलो रेंज पे आता है. तो ये तो ओरली हो जाएगा. दिस इज -1 to 1. Yes. ये जो है ना, इसका मैं तुझे बताता हूँ कि प्रोसीजर क्या है. सी वी नो दैट cos x is between -1 and 1. हाँ. बट यहाँ पे क्या है, माइनस cos x है. माइनस cos मतलब अब सबको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Minus. हाँ, तो 1 and -1. But So what will we sign get? We will get cos x is greater than equal greater to, than equal to. sorry, cos x is अच्छा, इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मिनट, लेट्स जस्ट ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट. सो वी हैव cos x is greater than equal to -1 and we have cos x is less than equal to 1. These are the two parts. चलो, now हाँ. multiply with minus. So and when we multiply with minus, inequality reverses Yes. and this will be minus cos x greater than equal to -1. Hmm. Okay, now we are adding 3. हाँ. So I'll add 3 on both sides. So 3 minus cos will be less than equal to 4. 3 Hmm. minus cos will be greater than equal to 2. Are you following this? Yes, sir. अच्छा, अब हमें रेसिप्रोकल भी लेना है. Do you know this rule Hmm. of inequality? When we take reciprocal, so on both sides, the inequality reverses. Yes. 1 upon 3 minus cos is less than equal to half. So what is the answer? हाँ. That 1 upon 3 minus cos, we are getting it is more than equal to 1 by 4 and less than equal to half. 1/2. So that is Yes. the answer. The range is basically between 1 by 4 and half. 1/2. Yeah. Yes, sir. I'll write this. Next is e raised to minus 3x. So इसका जो range होगा, exponential function है ये. See, if you take x is 0, तो answer 1 आएगा. 1 on there. See, the answer is always going to be positive. Positive. ठीक है. Yes. And 0 कभी भी नहीं होगा, तो 0 to infinity. To infinity. और next cos है, तो same अपना normal -1 to 1. अंदर कोई भी वैल्यू हो उतना ही एंगल का होएगा ना, ना उससे कॉस्ट. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. So डोमेन में फर्क पड़ेगा. हाँ, डोमेन में ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, रेंज में फर्क नहीं पड़ेगा.
चलो नेक्स्ट इज आरुष। क्वेश्चन 6 का क्या करना है, डोमेन या रेंज, जस्ट चेक। हाँ एक सेकंड सर। सो क्वेश्चन 6 भी सेम रेंज। रेंज ना, ठीक है। हाँ So question 6a is, you tell me for question 6a, what will be the range? सर रेंज विल बी द सेम। रेंज को फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज को फर्क पड़ेगा क्योंकि अब बाहर टू अच्छा। है आरुष, बाहर हाँ टू हाँ है। रेंज So range will now become for question 6a minus 2 to 2. माइनस We'll 2 to multiply 2। it हाँ with 2 basically. डबल हो जाता है। यस यस डबल हो जाता है। अच्छा b डबल हो जो है, जाता है। b is I'm not able to read it properly, so tell me, is it x square upon x raised to 4 plus 1? या Yeah. हाँ So Arush, whenever we have to find the range over here in question B, the function is f of x equal to x square upon x raised to 4 plus 1. And there is a यस certain procedure which we have to use for finding the range, which is same for all sums, except if we have log and something, तो थोड़ा situation change हो जाएगा, but otherwise it's more or less the same. So over here, हाँ the rule is we will first replace f of x with y, because f of x can be written as y. So y is equal to x square upon x raised to 4 plus 1. Now cross राइट multiply. So we get x raised to 4 into y plus y equal to x square. I'm shifting everything to the left. So see, x raised to 4 can be written as x square the whole square, y minus x हाँ square plus y equal to 0. See, because we have x square and x raised to 4, if I assume x square as, let's say, a for example, so we will get a square y minus a plus y equal to 0. यस सर। Do you realize, Arush, that this is a quadratic equation in variable a? Like usually यस we have it in terms of या x, x square होता है, यहाँ पे a square है, so it's a हाँ quadratic in a. In यस quadratic equation, do you remember we had that condition that when x is real, then the discriminant b square minus 4ac is greater than equal to 0? या 10th में सीखा था हमने ये. So we will be हाँ using that condition here. Do you remember what is abc for a यस सर quadratic? यस So what यस is सर। abc over here? सर माइनस ए इज बी बी इज माइनस ए एंड ए गलत, इज वन ए गलत, इज वाई। गलत, अच्छा गलत. A सॉरी is बी y, इज माइनस वन बी इज a माइनस is वन y, ए इज वाई एंड सी b इज वाई is b is minus 1, माइनस c is y. सी तो इज चलो वाई। इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस वन सर द सी होल इज वाई स्क्वायर, सी सी इज वाई, वाई है। बराबर, 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 बराबर. माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, so this सी is greater या than equal to 0. 1 minus 4y माइनस square is फोर greater बाई than equal to 0. तो 1 minus 2y and 1 plus 2y is greater than equal to 0. जीरो। तो अब वेविकव मेथड, यहाँ पे y के वैल्यूज है माइनस हाफ प्लस हाफ, between them we have 0. I'm taking 0. When we substitute y as 0, आंसर पॉजिटिव आ रहा हाँ है और बाकी में नेगेटिव आ रहा है. So here the answer is between minus half and half. हाँ But do you realize, आरुष, ये फंक्शन ऐसा है कि इसका आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि सब स्क्वायर्स है और रेस टू 4 है. So the answer is actually 0 to half. Answer will never be negative. 0 to half. सर ये बेबी को से कैसे निकाले, एक बार बेबी को वाला माइनस हाफ टू हाफ वाला बताओ। हाँ, लॉग इन कर बताता हूँ. हाँ सर मैंने जो हिट एंड ट्रायल से किया था उससे ज्यादा जल्दी हो गया था। आई जस्ट टुक थ्री वैल्यूज एंड से 0 to half आ गया था। सब समय काम नहीं करेगा वो. हाँ मतलब ये सम के लिए ये तो बहुत बेसिक सा फ्रैक्शन था ना।